Hello everyone and welcome to this session number 8 which is the daily drill for QADI for XAT 2025. Now as a part of this session what I'm going to do is I'm going to discuss 5 quant questions that are there and they will help you understand what happens at the XAT and they will help you solve these questions as well. Now in terms of the crash course, I have recently launched this crash course, so you can check out the description below for the details and you can avail this course as soon as you can so as to not miss out on any live sessions that we have. So let's get going with the presentation now. So let's start with the first question. It's advised that you try this out on your own and then have a look at the solution that will follow. Now, this is a rather simplistic question because you have been given some notation here. If A symbol B is nothing but A plus B, so in that order A plus B multiplied by B, then you have to find out what is the value of this. Very, very easy question. That 2020, all of you should have got this mark for sure. Now 5 symbol 2, 5.2. What does this mean? It means 5 plus 2 multiplied by the second term, that is 2. So you'll get 7 into 2, that is 14. तो 14 मिल जाएगा यहाँ पे, right? 5.2 का मतलब क्या बनेगा? 5 plus 2, that is 7. 7 multiplied by 2, that is 14 मिल जाएगा. Now my expression basically becomes 14.5. तो इसका मतलब क्या बनेगा? Again it's a plus b, which means 14 plus 5 multiplied by the second term, that is 5. So we will get 19 into 5, that is going to be equal to 95. So the correct answer here should be option C, that is 95 to this particular question. Let's look at the next question now. So ये वाला question देख लेना, try it out on your own and then have a look at the solution that will follow. Now a man is laying stones from start to end along the two sides of a 200-meter walkway. So 200 मीटर का कुछ walkway है यहाँ पे. So let's say there are two lines here. तो ये 200 मीटर का walkway है पूरा का. The stones are to be laid 5 meters apart from each other. तो अगर यहाँ पे first stone है तो second stone भी 5 meters apart, 5 meters apart, 5 meters apart ऐसे होना चाहिए. When he begins, all the stones are present at the start of the walkway. तो यहाँ पे बहुत सारे stones मेरे पास पड़े हुए हैं. He places the first stone on each side at the walkway start. तो यहाँ पे और यहाँ पे दो stones रख दिए उसने. Then what happens? For all the other stones, the man lays the stones first along one of the walkway's sides. तो one side पे उसने रख दिया. Then along the other side in exactly similar fashion. तो पहले लेफ्ट में फिर राइट, पहले लेफ्ट में फिर राइट, पहले लेफ्ट में फिर राइट, ऐसे चलते रहेगा. However, he can carry only one stone at a time. तो अगर लेट्स से उसको सेकेंड वाले इटरेशन में जाना है, the gap has to be 5 meters away from each other, apart from each other. तो यहाँ पे 5 meters होना चाहिए. So basically he picks a stone from here, travels 5 meters, then comes back, picks another stone, travels 5 meters, comes back, and so on and so forth. ये चलेगा. Then we have to figure out to lay each stone. The man walks to the spot, lays the stone, and then walks back to pick another. After laying all the stones, the man walks back to the start. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, नहीं करते, and then they end up messing the answer, right? वो नहीं करना, messing up the answer, which marks the end of his work. What is the total distance that the man walks in executing his work? Assume the width of the walkway is negligible. तो width कुछ भी नहीं है, ये negligible है. तो बेसिकली वो क्या करता है, यहाँ से एक स्टोन उठाएगा, पहले तो यहाँ पे रख देगा, तो वहां पे कुछ काम करने की जरूरत है, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा. बट यहाँ से स्टोन उठाएगा, ही विल हैव टू ट्रैवल 5 meters. सो ये वाले गैप को फिल करने के लिए 5 meters वो ट्रैवल कर रहा है. Then again he is traveling 5 meters back to his original position. Then again he is traveling 5 meters to go and put a stone here. Then again he is traveling 5 meters to come back to his position. तो 20 meters को ट्रैवल करना पड़ा. What about the next part of the journey? यहाँ पे जाना है उसको 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है. 10 मीटर ट्रैवल करके वापस आ गया, वापस 10 मीटर ट्रैवल किया, वापस आ गया. तो नाउ ही इज स्पेंडिंग 40 meters. यहाँ पे क्या होगा? 30 meters, 30 meters, sorry, 15 meters, 15 meters back, 15 meters again, and 15 meters back again. So 60 हो गया. Now you can see that 20, 40, 60 तो एक प्रोग्रेशन बन रहा है ना, because every set of stones is 5 meters away. You will have to spend 5, 5, 5, 5, 20 meters extra for each succeeding row. तो वो होगा यहाँ पे. अभी कितने सारे यहाँ पे रोज होंगे, that is the question. अब 200 मीटर वॉकवे है और 5, 5 meters पे हम लोग स्टोन्स सेट कर रहे हैं. तो 5, 5 में कितना हो जाएगा? 40 होगा. लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक दैट 40 होना चाहिए करके, बट अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे जब मैं फर्स्ट स्टोन रख रहा हूँ, सेकेंड स्टोन रखूंगा तो 5 का गैप आएगा, एक और स्टोन रखूंगा तो 5 का गैप आएगा. ऐसे करते करते मेरे को चाहिए 200 मीटर्स का पूरा वॉकवे होना चाहिए. Now 200 meters will basically mean 40 sets of 5 stones each. That is what we have to understand here. Now 40 sets of 5 stones each अगर मैं देख रहा हूँ, right? 40 sets of 5 stones each. Now what does this mean? Let's say for example it was a 10 meter walk.
अब 10 मीटर वॉकवे होता तो 5 के 2 आ गए, तो 2 बार मुझे करना पड़ रहा है। 15 मीटर में 3 बार करना पड़ रहा है, तो 200 मीटर्स में मेरे को 40 टाइम्स करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया। But 40 times will basically mean your first iteration of 20, second iteration of 40, third iteration of 60। ऐसे करते करते 40 iterations अगर मैं करूंगा तो मेरे को लास्ट नंबर क्या मिलना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन नाउ। एंड आई एम अगेन कमिंग बैक टू द स्टार्ट, तो 40th iteration भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो 40th iteration विल बी 40 into 20, दैट इज 800। तो ये मिल जाएगा। आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दीस, क्योंकि मैं लास्ट में वापस आ ही रहा हूँ ऑन दी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो क्या होगा इसका? दिस विल बेसिकली बी द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का जो फॉर्म होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज n by 2 into t1 plus tn। और फॉर दोस ऑफ यू हैव मेमोराइज्ड द फॉर्मूला 2a plus n minus 1 into d is exactly the same। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सम क्या होगा? n है 20 इंटू 1 से लेके 20 इंटू 40 तक है, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 800, दैट इज 820। So this is what you're going to get. Now, if you just cancel this out, you are going to get a 20 here. 20 into 820 will be 2 zeros, and 82 into 2 will be 164. So the correct answer here should be 16,400 meters, option A. Let's look at the next question now. A box contains 6 cricket balls, 5 tennis balls, and 4 rubber balls. Out of this, some balls are defective. तो एक बार देख लेना इसको, then have a look at the solution. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? प्रोपोर्शन वगैरह की बात की गई है। So let's say for example there are 6 cricket balls. Let's say there are C that are defective. 5 tennis balls. Let's say there are T that are defective. So I'll just write total here. These are the total number of balls, and let's say I am writing this as the defective number of balls. What about rubber balls? 4 rubber balls है, उसमें से R defective होने चाहिए। That is what we are looking at, right? Now we have been given some inequalities that exist, and वो inequalities अगर मैं manage कर लूंगा, then I should be able to get some possibilities that exist for the number of red balls in this particular box। तो वो एक बार अगर हम लोग लिख लेंगे, then I think we should be fine। So एक बार इसको लिख लेते हैं, then see how we proceed। So let's see what it looks like। तो पहले वाला पार्ट को देख लेते हैं। We know that the proportion of defective cricket balls is more than the proportion of defective tennis balls। So cricket balls का proportion defective क्या है? C by 6। Now we know that this is greater than the proportion of defective tennis balls, so this has to be greater than 5 by t, or t by 5 rather। So ये t by 5 आएगा यहाँ पे। तो c by 6 is greater than t by 5 is what we can see in this particular context। We also know that, but this is less than the proportion of defective rubber balls। So rubber ball से कम है, तो defective rubber balls का proportion will be r out of 4। ये proportion defective हो जाएगा। We also know that moreover the overall proportion of defective balls is twice overall proportion of defective balls। total proportion क्या हो जाएगा? R rubber balls are defective, C cricket balls are defective, T tennis balls are defective। out of how many total balls? 6 plus 5 plus 4 मतलब 15। This is twice the proportion of defective tennis balls। So this is twice the proportion of defective tennis balls। 2 into T by 5 आएगा। We have to figure out defective rubber balls का status क्या है, मतलब कितने exactly मिल रहे हैं, या फिर कुछ option अगर मिला तो we will have a look at this। Now what can we see here? We can say that this is 5 3s are 15, so you will get R plus C plus T equals 6T। 3 वहां पे चला जाएगा, और you will get R plus C equals 5T। ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, so we are going to get R plus C equals 5T in this particular context। अब इसके आगे क्या होगा यहाँ पे? We also know that this has to be satisfied। ठीक है, अब अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ पे अपने को R प्लस इक्वल टू 5T मिल रहा है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ T? अगर T का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, अगर T का वैल्यू 0 आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन? इफ द वैल्यू ऑफ T becomes 0, then the value of R and C also becomes 0। तो सारे प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे, which does not work, which means that T का वैल्यू has to be greater than 0। अब T का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? If the value of T is 2, it means that each and every cricket ball and rubber ball is going to be defective, because 10 बनाने के लिए 6 plus 4 मुझे लगेगा। So that tells me that T का value can be only 1। T का value सिर्फ 1 होगा, is what I know, which means that R plus C का value will be equal to 5। So R plus C का value 5 बन जाएगा, ये मेरे को पता है। Now let's see what happens here। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है ना, ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू द सेम वे सो दैट यू मेक योर लाइफ इजियर। तो 4 6 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम इज 12, 12 और 5 का एलसीएम इज 60। तो लेट्स मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 60। इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विद अ पॉजिटिव नंबर। तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट 15R हियर एज माय फर्स्ट टर्म, ग्रेटर देन 10C। That's what we are going to get 60 से मल्टीप्लाई किया तो, and this in turn will be greater than 12T। तो ये मुझे मिल जाएगा। Now I know as a matter of fact that T का वैल्यू is 1।
which means that 10C has to be greater than 12, which means that C has to be greater than 1, because C अगर 1 हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 10 आ जाएगा. But because this is going to be 12, 12T की जगह पे 12 ही होगा, because we know that T का value is 1. 10C greater than 12 will mean that C का value is either 1, not 1 rather, 1 हो ही नहीं सकता. It can be either 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, or it can be 6 as well, because there are 6 cricket balls that exist. ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं. Now the point here is that R plus C is also equal to 5. तो C 6 हो नहीं सकता कुछ भी करके. So 2, 3, 4, 5 बचा मेरे पास, which basically means that the corresponding value of R is going to be either 1 or sorry, it's either going to be 3. If this is 2, then this is 3. If this is 3, then this is 2. If this is 4, then this is 1. If this is 5, then this is 0, because दोनों मिलके 5 बनना चाहिए. Now let's see each option. अगर ये 3 है, 15 3s are 45, 10 2s are 20. This works. So R equal to 3 will work for sure. What if R is equal to 2? 15 into 2 becomes 30, and C correspondingly becomes 3. 10 into 3 30. Inequality मेरा establish नहीं होगा. So R equal to 2 पे चलेगा नहीं. R equal to 1 पे R will become lesser and C will become higher. So it doesn't work that way. So the only way it is possible is if the number of defective red balls or rubber balls is equal to exactly 3. तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. So the correct answer here is option C that we have. Let's look at the next question. When expressed in a decimal form, which of the following numbers will be non-terminating as well as non-repeating? Now, if you know what exactly to look at, this is possibly one of the easiest questions that you can see at the XAT. तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का बेसिक मतलब हो जाता है इरैशनल. So if you know what irrational numbers are, you are sorted. Irrational का मतलब ये होता है that you cannot express it in the form of p by q, where p and q are both integers. इसका मतलब ये हो जाता है that you will have something like a pi in the mix, or you will have something like a root of a non-perfect square in the mix, या फिर एक e टाइप का कुछ नंबर आ गया. वैसे वाले नंबर्स हम लोग देख रहे हैं. लॉगरिथम शायद आ सकते हैं. तो these are what we are looking at. So now let's look at the options that we have here. One option is obvious. So when I saw it in the test as well, मैंने सिर्फ option C देखा था. Plus root 3 आ गया. Whatever you do, as soon as you add plus root 3 to it and it's not getting cancelled out anywhere, you know that this is basically going to be the answer. So this was the answer, of course. बट इसको अगर देख लेते हैं, पाई बाय टू इंटू वन बाय पाई, ये वाला निकाल देंगे तो ये पाई कट हो जाएगा. तो आई विल बी लेफ्ट विद 1/2. सेकेंड वाले ब्रैकेट को अगर ओपन, या सेकेंड वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. यू विल डेफिनेटली से दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ. साइन 1 का स्क्वायर, साइन 2 का स्क्वायर, साइन 3 का स्क्वायर से करते करते साइन स्क्वायर 89 तक भी चले गए, तो भी यू विल बी एबल टू गेट समथिंग विच विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री पे दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक लाइक, 2 पे इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. Also add to it the fact that you will have complementary angles that will be there at both sides. तो इसका भी आंसर अपने को परफेक्टली आ जाना चाहिए. थर्ड वाला भी एस्टैब्लिश कि इट्स इरेशनल. व्हाई? बिकॉज रूट 2 इंटू 3 रूट 2, चलो ठीक है, यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड 6 आएगा. माइनस 4 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, आई अंडरस्टैंड 4 आएगा. बट ये प्लस रूट 3 का क्या करें? दैट इज द प्रॉब्लम. एंड दैट्स व्हाई सी इज इरेशनल. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग. क्यूब रूट ऑफ 729 will be 9, तो ये बन जाएगा. 22/7 again is not pi. 22/7 is something that will be a non-terminating, yes, but a repeating decimal. तो ये भी अपना आंसर नहीं है. What about 4 minus pi into 1 plus pi by 4, 1 plus pi by 4 the whole square, and so on and so forth. तो यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट अगर देखेंगे, pi का वैल्यू इज लेस देन 4. सो यहाँ पे जो अपना कॉमन रेशियो है दैट इज लेस देन 1. सो a upon 1 minus r, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर केस. सो ये वाला जो पूरा इनफाइनाइट जीपीयू होगा, उसका वैल्यू विल बी 1 upon a upon 1 minus r. So 1 upon 1 minus r is pi by 4 in this case. So this is what we are going to get. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस पाई से, यू विल सी 4 माइनस पाई गेटिंग कैंसल्ड आउट, एंड ऊपर तुम्हारा न्यूमरेटर में 4 आएगा. दैट विल बी द आंसर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, जहां पे एक एक्स्ट्रा रूट 3 आता है. दैट इज द वन दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. एक बार देख लेना, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन, एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन दैट विल फॉलो. नाउ वी हैव टू एंश्योर दैट z को मैक्सिमाइज करना है. अगर z को मैक्सिमाइज करना है तो यू कैन सी 15a स्क्वायर प्लस c प्लस 0.5d. तो ये तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो आई शुड ऑल्सो मैक्सिमाइज a, c एंड d. ये तीनों को मेरे को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. ओनली इफ आई मैक्सिमाइज दीज थ्री विल आई बी एबल टू मैक्सिमाइज z. एंड ऑन द अदर हैंड आई नीड टू मिनिमाइज b एज मच एज आई कैन, या मिनिमाइज b रादर, वो करूंगा तो फिर मेरा काम निकल जाएगा. सो लेट्स सी, 2a plus b is less than or equal to 2.
So it behooves me to ensure that B is as low as is possible. What is the lowest value that B can take? सारे के सारे non-negative integers हैं. So the minimum value that B can take is 0. Let's see if this satisfies the entire thing or not. अगर B 0 है, तो A has to be less than or equal to 2 और A has to be less than or equal to 1. So the best case में क्या हो जाएगा? A का value 1 हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. अब यहाँ पे 4a है तो इसका वैल्यू 4 हो जाता है. 2b का वैल्यू 0 बन जाएगा. c का वैल्यू मेरे को नहीं पता. सो c बिकम्स लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस 4 और 8. तो c का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 8. यहाँ पे क्या करेंगे? 3 into 1 is 3, 4b becomes 0. So d is less than or equal to 15 minus 3 or 12. तो d का मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है 12. Now the question is, what value must D take? D must take the value of 12 in this particular context, and that's why the correct answer here is option B. If you have liked this set, do put a like to this video. Do let me know in the comment section what did you think about the questions here. All the questions were from XAT 2020, so I hope you had fun solving these questions. Also subscribe to the channel and let your friends know as well if they are preparing for the XAT. And again, to reiterate, the crash course for XAT is already on. Do have a look at it by checking out the link in the description box below. And I hope to see a lot of you attending these sessions that we are conducting on a daily basis.